नमस्कार जय जगन्नाथ पिला मन जदि ऑडियो वीडियो सब किसी क्लियर अछि तो समस्त यस कह दियो। ओके समस्त स्वागत करुच्ची आज LTR आर्स महा माराथन सेशन को जदियो आज आमर आउ गोटे महामाराथन शेड्यूल रही 4टा बेले तो यही सेशन आम आज पॉलिटी एवं हिस्ट्री किसी आज क्वेश्चन करवा एवं ठीक आज अपराह्न 4टा रु राति 12टा पर्यंत आपण रही महामाराथन। ओके यस आरती प्रणाम प्रणाम पिला माने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत दुखित आज टिके टेक्निकल इश्यूज पाई क्लास टिके लेट हो गला। ओके तबे हमें आरंभ करबा आज रो सेशन समस्त रे फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दियो रे। यस जितने जल्दी पारुच समस्ते टिके शेयर कर दियो। आज सेशन बहुत लंबा सेशन रहिबो। ओके एबे हमें चेष्टा करिवो जहाँ जहाँ अपन सिलेबस रे रही संपूर्ण सिलेबस को आज कवर करिया पई जहाँ बाकी रहिबो हम तक आफ्टरनून समय हम तक आज सारिबा। ओके अरे 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 मान्यवर। ओके तो पिला माने हमें समस्त जानी कि आम संविधान केतोटी आर्टिकल रही केतोटी भाग रही केतोटी अनुसूची रही केते थर आम संविधान आज पर्यंत अमेंडमेंट हो सारी तो आम आगुरी बहुत थर ए विषय चर्चा करिसेंती। तो आज अपन रिविजन कहपे चाहिए जे हमर ओरिजिनल आर्टिकल पिला मान होची 395टी। ओके सो वर्तमान हमर 480 आर्टिकल रही। ओके सॉरी तो देखो जदि आम जाना भाग विषय पार्ट विषय पार्ट हूँ 22टी थिला आगु ओरिजिनल थिला वर्तमान 25टी शेड्यूल थिला आगु 8टी ओरिजिनल थिला अब वर्तमान अछि 12टी। सो आज ऑफ नाउ वी हैव 106 अमेंडमेंट्स। ठीक अछि सो एबे फर्स्ट क्वेश्चन आपण सामने समस्त आंसर दियो। अरे दियो आंसर दियो। ओके तो 101 पिला माने हमर कौन हो आंसर रे सर हम आंसर होची 395टी जहाँ बर्तमान मुझे कहूली कि आम संविधान जो मूल धारा जदि आपन को ऑप्शन रे केवल एक गोटे ही देखले मारिबे आर्टिकल सब माने चेंजेबल हबो। आज हमर थिला आगु 395 थिला ठीक अछि एबे 448 अछि पुनी आगामी दिन में मध्य आर्टिकल संख्या बढ़ी जीवो। ठीक अछि ओके सब जानी गले हमर अबाउट पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। ओके तो जब प्रश्न आसे कि सर फर्स्ट अमेंडमेंट केबे हितला रे सर फर्स्ट अमेंडमेंट हमर हितला होची 1951 रे। क्लियर हु वाज द फर्स्ट टू गिव एन आइडिया टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। भाई ए व्यक्ति को विषय में आगु पढ़ी चंदी तो ये किए रे चंदी हमर एमएन रॉय पिला माने एमएन रॉय को फुल ना कोन रे सर मानवेंद्र रॉय। ठीक अच्छे नाथ राय तो आमर आम कहीपर जड़े से जड़े एक्टिविस्ट जड़े
रेडिकल एक्टिविस्ट थे। तो ये कौन कले फर्स्ट ये आइडिया चलो हम इंडिया रे गोटे कौन करें गोटे संविधान सभा गोटे निर्माण करवा। ठीक अच्छे ओके परवर्ती देखिए प्रश्न ऑन व्हिच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये प्रश्न रही कि भाई अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान मुझे आगुरी बुझे पिला माने ते मो कैबिनेट मिशन पिला माने केबे आसिले रे सर 1946 रे आसीथिले। तो ता पूर्व आसीथिले कि हमरो 1942 रे आसीथिले कोन हमर क्रिप्स मिशन हमला रिजेक्टेड हेतला। ठीक अछि तो 1946 जो आसिले हम कोन रे ना कैबिनेट मिशन आइले हम तीन जण आइले के पिला माने से पथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर एंड स्टाफोर्ड क्रिप्स। तो सेमान को नै गोटे मीटिंग हला हम संविधान सभा होची मीटिंग आरंभ होइतला केबे सर डिसेंबर 1946 रे। ओके तो होची बर्तमान देखिए परवर्ती प्रश्न ऑन व्हिच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। यस निर्मल जुल्फिकर आरती जय महाकाल केस वारिक मान्यवर समस्त पिला माने आज स्वागत करुची एवं समस्त आज लागी पड़ो। आज आपण पई करबा मरण स्थिति पहुंची सारची आसंता काली परीक्षा। ओके ओके सो कौन योर आंसर है सर बी हब आंसर सर नवंबर सर डिसेंबर 9 1946 फर्स्ट मीटिंग हला कोट ना सर देला हमर दिल्ली रे हला। The first draft of the constituent was prepared by प्रथम हम संविधान रो ड्राफ्ट को किए करथिले प्रिपेयर ए व्यक्ति किए पिला माने हम समझते सेशन को लाइक कर दियो रे लाइक और गोटे शेयर ते कर दियो। ओके सर बीएन राव ठीक अछि जिनर बीएन राव। ड्राफ्टिंग कमिटी had how many members हम ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जन मेंबर थिले रे सर थिले हमरो 7 जन। ठीक अछि 7 जन थिले मेंबर्स किए देखिबा सर डॉक्टर बी आर आंबेडकर एन गोपाल स्वामी आयनगर एंड आलाडी कृष्णा स्वामी आयर डॉक्टर के मुंशी शायद मोहम्मद सादुल्ला एन माधव राव टी कृष्णा मजारी। ठीक अछि these are the 7 peoples the members of drafting committee। सो पिला माने एठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट रही जे अपन मन स्लाइड रही छी। सो माने हमरो यूनियन पावर कमिटी रो के थिले होजंती मुख्य माने हमरो चेयरमैन के थिले छोटा टिके पढ़ी न पिला माने इतु मध्ये क्वेश्चन अगला आसी छी और आसुथबो मध्ये लागी आपन ड्राफ्टिंग कमिटी के थिले चेयरमैन हमरा बी आर आंबेडकर थिले। ठीक अछि सेमति आपन प्रश्न आसीबो यूनियन पावर कमिटी रो थिले के चेयरमैन सर जवाहरलाल नेहरू। ठीक अछि तो सेमति आपन को प्रश्न आसीबो कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो थिले के चेयरमैन सरदार पटेल। Who among the following was the constitutional advisor of the Constituent Assembly? कौन होगा आंसर यार कौन लिखला मारती बी एन राव एंकर ना हो जे लिखि दउछि मु ओके नरसिंह राव। ठीक अच्छे आरती क्लियर ओके फुल नेम सो कौन आंसर अगेन बी एन राव। बहुत बढ़िया on which date the constituent assembly had adopted the constitutions केबे केबे हमर संविधान अडॉप्ट कराई जायथिला
सर नवेम्बर 26 रे 1949 अडॉप्ट हला केबे हला प्रणयन रे सर जनवरी 26 1950 ला प्रणयन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो एटी टिके पिला माने प्रश्न जदी बुले दबो ना तो जदी प्रश्न पड़िबो इंटरिम प्रेसिडेंट किए तर कोन लिखिबो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो एटी प्रश्न अछि कि प्रेसिडेंट के माने स्थायी सभापति प्रश्न पचारछि सुबलाने कोन आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होचंती सठिक आंसर अदर इंपोर्टेंट फैक्ट हम तो चेक कर दबा देखो हमरो एलिफेंट अडॉप्ट हेतला हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज ए सिंबल भावरे बीएन राव तले एडवाइजर बीआर आईन करथिले सेक्रेटरी हमरो एटा ए फैक्ट होच केवल ओनली मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली ठीक अछि सो एन मुखर्जी प्रेम बिहारी राजदादा ए पिला मन देखो ये हम हैंड रिटन ठीक अछि संविधान को हाथ पर ये लिखिथिले नाटक मध्य केबे परीक्षा रे पड़े यस ए पिला माने क्वेश्चन आपण मानन पई द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट ए क्वेश्चन समस्त सठिक आंसर दबो व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट is adopted in the Constitution of India. Yes, Dekharani, good morning. जय महाकाल, जुल्फिकार, आरती बहुत बढ़िया पिला उन्हें आंसर दो जी पिला मैंने समझते शेयर कर कि नहीं रे अरे मो भी तो शेयर कर दिए ओके वेट आंसर दियो ओके यस रेखा रानी देखो पिला माने आज हमर गोटे अछि महामाराथन अछि आज महामाराथन मो ऑलरेडी तार शेड्यूल हम टीम पके सारी छंती ओके आज आरंभ होबो 4 पीएम रु राति 12टा पर्यंत आरंभ होबो ठीक अछि आज 4टा आरंभ होबो ठीक अछि तो आज समस्ते आमे विभिन्न क्वेश्चन कम आज पढ़िबा हमर हिस्ट्री पॉलिटी ओके आउ अपन ओडिया इंग्लिश सब किछि तो पिला माने समस्त आज स्टे ट्यून्ड आज हम पाई आज बहुत बड़ ओटे परीक्षा दिन हम जते आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा एंटर आपन रहला सोशल स्टडीज जीके जीएस ओके तो आपन हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स ये समस्त विषय आज हमें अपराह्न 4टा रु राति 12टा पर्यंत हम आज मध्यरात्रि पर्यंत आज क्लास रहिबो तो केही मिस करिवे नाही एटा प्रथम सूचना द्वितीय सूचना होची क्लास टाइम तो मोले कहि देली तो एबे जो सेशन चली पिला माने आपन नियरेस्ट डियरेस्ट जो सांग माने अछंती सेमान को मध्य क्लास टे शेयर पहुंचे दियंतु तांको मते जणे दियंतु ठीक अछि आ जो माने सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करंतु सो दैट जानि परिबे नोटिफिकेशन आ आपन देखंतु पर टॉप रे दिया छि टेलीग्राम चैनल लिंक दिया छि टेलीग्राम चैनल जॉइन करि जानतु ठीक अछि आज तो लंबा क्लास चलिबो मो गळा मध्य आज खराब होबा को लागिलानी तो समस्त टे कोऑपरेट करिवे
यस रेखाराणी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स मस्ट मस्ट क्वेश्चन अच्छी ओके तो यस ऑफ कोर्स हमें एंट्रेंस पे मध्य आरंभ करिवो डोंट वरी ओके मैक मरी रिपीट हरी 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 ओके शिवानी प्रियदर्शनी नमस्कार नमस्कार ओके तो पिला माने चलନ୍ତୁ विलंब न कर आरंभ करबा जे बहुत क्वेश्चन रही तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थैंक यू आरती Which of the following is the biggest source for the Constitution of India? तो ये पिलाने प्रश्न रही रे एमान को मध्य बिगेस्ट सोर्स कौन आम संविधान पाई कोटा ना सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जेता बळे एई एक्ट आसिला तो कौन कहले रे कहले कि हम जवाहरलाल नेहरू कहले सर दिस एक्ट इज like a machine without is a machine without engine तो बट परवर्ती समय ए एक्ट ने कौन हला रे हमर संविधान सभा को ही निर्माण करा जाइथिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैश सर इट्स ए पार्शियल रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भाई एठी कोन सबले कहे रे एठी पिला माने पिंपुड़ी ओके हाथी मु देखि जो माने एग्जांपल माने अछि कि नहीं ओके एठी हाथी गली जीवो किंतु पिंपुड़ी जाई परिबो नहीं हमर संविधान एमती तारीख पे तारीख हमेशा आता रहेगा परवर्ती से देखिए प्रश्न कौन कहूची रे Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee? मुई टिके आगु पिला माने कहिथिल ना रे ए प्रश्न पढ़िबो ए प्रश्न बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तेबे कोन हबो साइड प्रश्न रही छै हमर कि हां जवाहरलाल नेहरू अछि पिला माने हमर सटीक आंसर देखथिले कोन हमर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे थिले होचंदी हमर चेयरमैन ठीक अछि जो माने देखिछ मोर जियोग्राफी क्लास ना मु आगुरु करेछि 5 घंटिया 6 घंटिया महा मैराथन क्लास करेछि एग्जाम जीवा पर प्लीज ताकू थोड़े देखि नियो पिला माने सोर्स एते सोर्स मु देछि आपन को किछि औ अन्यत्र जीवा को पड़िबो नाही ओके सो हाउ मेनी पार्ट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैव वर्तमान केतोटी पार्ट हमर अछि रे सा थिला होछि केतोटी बे हैला केतोटा ना 25 टा आरंभ कहे पिला माने हम वर्तमान 25 टी पार्ट रही which part of the Indian Constitution contains the union state relations पिला माने केंद्र और राज्य मध्य संपर्क थिबार हम संविधान रो केउ भाग कहूची रे सा भाग 11 कहूची केमती राज्य और केंद्र मध्य रे संपर्क केमती रहिबो ओके According to the Indian Constitution, which of the following is incorrect pair? So एमान मधुर pair देखो कोटा incorrect अछि देखिए वर्तमान पिला मानकर बुद्धि परीक्षा करा जीवो yes रेखा हमरो I'll check it yes of course geography economics already हमर थिबो प्लेलिस्ट अछि ओके सो मु आउथरे मते टेलीग्राम रे शेयर कर देबी मुटे चेक करबी ठीक अछि भूली जाईची जेतु एते गुडा क्लास होउची एते सार मैडम माने क्लास नोचंती तो मते चेक करी ही कहबी ओके सो कोइटी प्लान अछि देखो पार्ट 2 रे लिखाछि सिटीजनशिप ए ठीक अछि एठी अछि लिखाछि इनकरेक्ट पेयर भाग 2 रे सिटीजनशिप ठीक अछि भाग चतुर्थ रे कोन अछि ना डीपीएसपी राष्ट्रीय निर्देशामूलक नीति ये मध्ये ठीक अछि सा आईवीएल फंडामेंटल ड्यूटीज ये ठीक अछि भाग नवम रे तो लिखा जायनी रे ए बाबा एटा कोन लिखाइछि रे लिखाइछि अबाउट द पंचायत लिखाइछि नवम रे सो एटा होछि पिला माने भूल अछि ओके एंड द यूनियन एटा होछि पार्ट 1 ठीक है पार्ट 1 एटा पार्ट 9 नुहे सो एटा हमर होछि सटीक आंसर हबो क्लियर ओके
सो देखो ये मध्य मु दर्शे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देछि ते पार्ट 1 देखो हमर होछि द यूनियन एंड टेरिटरी माने आर्टिकल 1 रु 4 सिटीजनशिप भाग 2 आर्टिकल 5 रु 11 फंडामेंटल राइट्स भाग 3 आर्टिकल 12 रु 35 भाग 4 डीपीएसपी ओके 36 रु 51 आईवीए पार्ट आईवीए फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A द यूनियन 52 to 51 पार्ट भी होची द स्टेट पार्ट भी डबल आई होची एटा उठी ठीक अछि एटा उठी आइछि रे आ सप्तम भाग नाही एटा हमर अबे उठी जाइछो नाही आ ठीक अछि पार्ट अष्टम होची द यूनियन टेरिटरीज पार्ट नवम होची द पंचायत पार्ट होची नवम ए होची द म्युनिसिपैलिटीज पार्ट नवम बी होची द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सो दीज आर द इंपोर्टेंट parts and articles on the subject of the Indian constitutions. Clear? All okay? Any sorts of doubts? Which of the following states is included in the 6th schedule of the constitutions? एटी पिलाने पार्ट नाइन एटी पचारची षष्ठ अनुसूची रे पचारची कौन हबो आज अपराह्न समय जो जियोग्राफी क्लास रहिबो ना राति रे आज बोधे आपनकर 4टा रु 6टा रहिची हिस्ट्री अनन्या मैडम नेबे आउ तापर 6टा रु 8टा रहउची आपनकर अमीर सर नेबे इंग्लिश ठीक अछि आउ तापरे 8 रु 10टा नेबे हमरो पीके सर ओडिया और 10 रु 12टा रहिची मोर मु आपन मारी क्लास नेबी 10टा 12टा होची जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस अल्प एंड हिस्ट्री मध्ये अल्प ठीक अछि बहुत बढ़िया सो पिला माने डी होची सटीक आंसर ओके Which of the following schedule of the Constitution of India has been incorrectly matched? एठी मध्ये दला incorrectly matched दला तो कोन आंसर एटा पिला माने अछि करेक्ट अछि सेकंड लैंग्वेज एटा पिला माने हबो रॉन्ग ठीक अछि सो पिला माने एटा हो हमर आंसर देखिबा तो पिला माने एठी प्रश्न रहिछि देखो किछि हमर शेड्यूल पे प्रश्न रहिछि शेड्यूल 1 कोन कहूछि स्टेट एंड यूटी नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स हमर शेड्यूल 2 कोन कहूछि रे स्पेशल पावर्स एंड सैलरीज डिटेल्स प्रेसिडेंट गवर्नर स्टेट स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर्स राज्यसभा एंड लोकसभा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स पिलामान समस्त पढ़ी नबरे आम जो रहा कौन 12टी जो रहा अनुसूची रही जो 12टी आम शेड्यूल रही डिटेल्स लिखाई ठीक अच्छे शेड्यूल 6 रे कौन अच्छी 5 रे कौन अच्छी ओके तो पे 8 ऑफिशियल लैंग्वेज विषय लिखाई ओके मुझे कहवाई चाहिए कि हिंदी आम राष्ट्रभाषा नुहे क्या हिंदी आम राष्ट्रभाषा बोले कौ जगह मेंशन करा जाए ना बट ये ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी एंड अदर state languages रही the fundamental duties of citizens were added to the Constitution of India by dash yes रेखारानी थैंक यू पिला मन डिटेल रे मु एथि पई আজি जे पे चेष्टा करू नाही जेतु काली एग्जाम रही तो मु जे जति डिटेल रे जीबी बहुत क्लास हम लेंदी हे जिवो बहुत लेट हे जिवो ठीक अछि आमे मॉक आमे जो समय मॉक प्रैक्टिस करिबा से समय पिला मन डिटेल रे ही पढौची ठीक अछि तो जेतु काली एग्जाम आज चेष्टा करिबा यथा संभव आज 100 200 400 500 क्वेश्चन हम आज रिवीजन करिया पई विथ अल्प किछि किछि कांसेप्ट को नेके हम जिबा आज ओके सो एटी कोन को आंसर यार सर एटी हमर सी होची पिला मन सटीक आंसर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा कौन आड हला रे से हमर एटा हला फंडामेंटल ड्यूटीज हमर आड हेथिला क्लियर अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द Constitution of India
is defection to another party, okay, after election made illegal. पिला माने क्वेश्चन टी बुझी पारला कि नहीं रे एटी पचाचे केउ अमेंडमेंट रे सर 52nd अमेंडमेंट द्वारा कौन हला रे इंडिया हैज डिफेक्शन ऑफ टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इज इलीगल in the year 1978 which amendment eliminated the right to acquire hold and dispose of property as a fundamental right. Yes, many constitutions. अरट चलाओ प्रति घरे घरे ग्रामर कलह तुटाओ ग्राम रे चाल सत्य पथे नहीं डर भय असहयोग रे विजय निश्चय छाड़ उच्च नीच भेद अहंकार हेउ नीलाचलु समता प्रचार तो कौन हो सटीक आंसर यार पिला माने और सी हो रे 44th अमेंडमेंट ओके so these are the important amendments and years and purpose and or description ठीक अच्छी so देची please go through it and it's very important पूरा अपन को दिया जायछि 106टा हमर जो पिला माने आज पर्यंत जो 106टा जो अमेंडमेंट हेछि ओके तार डिटेल्स एटी मु देई सरछि केउ अमेंडमेंट रे कोन कोन सब होछि तो मु केवल कहिछि मॉक टेस्ट में डिटेल जिबे ठीक अछि अपन देखिए बर्तन क्वेश्चन कौन कहूची प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम अरे हमर जो अमेंडमेंट होची प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट्स एटा में कहा ठु आनी चंती थैंक यू आरती रेखा अरे शेयर कर दियो रे ओके तो देखिए कौन को आंसर कौन कहूची ना साउथ अफ्रीका ठीक अच्छे आमर प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट हम कोड आले रे सर साउथ अफ्रीका नाइ रे रेखा यूएसएसआर नुहे रे ओनली साउथ अफ्रीका ठीक अच्छे प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ओके द लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस has been inconsiderably influenced by the constitution of dash the law making procedures हमें आनले कोटो law making procedures हमें को आनले कोटो सर आनले में जापान पाखरु ठीक अछि देखो the idea of DPSP directive principle of state policy अरे ओडिया कौन रे सर राष्ट्रीय निर्देशामूलक नीति में कहा पाख आनी चंती रे हम आनी चंती सर आयरलैंड पाखरु ठीक अछि चमत्कार देखो पिला माने आइलैंड में कोन ले ना डीपीएसपी आनिले सर फ्रांस में कोन ले आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी लिबर्टी माने कोन रे स्वतंत्रता इक्वालिटी माने कोन समानता आले जर्मन नु हमें कोन ले रे आले इमरजेंसी पावर्स हमें ऑस्ट्रेलिया आले पिला माने कॉन्करेंट लिस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेम वर्तमान देखिए कनाडा में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर
यूके रो मानले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ हमें यूएस मानले कौन रे फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू सो हमें बेसिकली जो ब्रिटिश पिलामन कहला देखो ब्रिटिश संविधान में कौन चंद्रे सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ ओके प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप ओके हमर ए स्टूडेंट्स हम आसला कोटा हमर ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसीची ओके द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर टेनर ऑफ सिविल सर्वेंट एटा मध्ये अपन ओपीएससी यूपीएससी मध्ये पढी थाए इंडियन अच्छा हमें कौन रे यूएस वाले कौन जुडिशियल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट्स सो इट इज फ्रॉम कौन रे डीपीएसपी एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो देखो हमें जस्ट पिला माने सोवियत हमें कौन ले 5 years प्लान एंड फंडामेंटल ड्यूटीज यस सो साउथ अफ्रीका रो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्लियर preamble what is preamble right we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic to secure to all its citizens केमती justice ଆମର लिबर्टी इक्वालिटी फटर्निटी सो जानिया वर्तमान प्रिएम्बुल उपरे कोन प्रश्न हमको आसी पारे प्रिएम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री हमें प्रिएम्बुल ओडिया कोन रे सरे हमें कहि परिबा कि प्रस्तावना अनुसूची ठीक अछि प्रिएम्बुल इज द प्रीफेस द कंटेंट ऑफ आवर संविधान ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन रोड में कहबे कि गोटे जेम हम प्रत्येक बही रे पिला मान थाय कोन गोटे सूचीपत्र थाय रे ठीक सूचीपत्र तो इट्स यू कैन से इट्स अ मिरर गोटे दर्पण कहार ना संविधान रो एते बड़ संविधान के पढिबो तो ताट बेटर हम कोन करि परिबा ने सब प्रिएम्बुल को पढि दबा ओके सर अमेरिकन रोमानले कौन रे सर प्रिएम्बुल हमर आइला होची यूएस रो आसिला प्रिएम्बुल अरे इरिस अरे एट कोड देखला होची इरिस हां ठीक अछि the correct sequence of various destination values mentioned in the preamble of the constitutions कौन हो आंसर यार 127 एबे हम कहली करेक्ट सीक्वेंस कोटा सर जस्टिस तापरे इक्वालिटी तापरे सॉरी जस्टिस और लिबर्टी तापरे इक्वालिटी तापरे फ्रेटर्निटी न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भातृत्व भाव ठीक अछि ए देखो एडी फास्ट कौन छी रे एडी फास्ट जस्टिस अछि तब लिबर्टी अछि तो इक्वालिटी तापरे अछि फ्रेटर्निटी किछि तो पढू ना हो पिला माने हमर ठीक अछि how many types of liberty are mentioned in the preamble ए सेम क्वेश्चन आज मध्य मो रिवीजन नेबी राती रे ठीक है 10टा बळू नेबी क्लास सो बी प्रिपेयर्ड ओके 128 कोन हो रे आ 10टा फास्ट हमर हबो छी जियोग्राफी क्लास ओके जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स फास्ट हबो तापर होची पॉलिटी एंड हिस्ट्री एमथरे आज हिस्ट्री अपन क्लास 4टा वाले भी मैडम नेबे ओके तो 120 होच कोन रे सर एठी पांचटी रहिची लेखा हिची लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप
5 पर पिला माने ठीक अछि हमरा कोन रे लिबर्टी लिखा है 5टी लिबर्टी ऑफ थॉट्स लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप मु ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी रो थ्योरी क्लास करिछि रे ठीक अछि देखि नेबो प्रियम्बल रो व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कोन 129 सर बी हो आंसर इट इज नॉट एनफोर्सेबल ओके प्रियम्बल हमर एनफोर्सेबल नुहे बा विचाराधीन हे परिबो नाही बट फंडामेंटल राइट होची एनफोर्सेबल नो प्रॉब्लम पिला माने देखा रानी जुल्फिकर साहू केस बारिक बहुत बढ़िया देखो बेरुबारी यूनियन केस केशवानंद भारती केस एलआईसी ऑफ इंडिया केस तो पिला माने मु गोटे एबे टॉपिक करथिली अबाउट केशवानंद भारती केस को मान देखिछ कहलो ए टॉपिकटा को मान देखिछ मात्र माने गोटे मिनिट रो क्लास इज 1 मिनिट रो क्लास इज तो देखि न बरे बहुत गुरुत्वपूर्ण ओके according to the article 1 धारा 1 हमर कोन कहूछ रे धारा के पिला जानछ कि नै धारा के कोन सा इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states पर इंडिया सेटा ही भारत कौन होगा आंसर यार सर द यूनियन ऑफ स्टेट्स which is सठिक आंसर यस वेरी गुड देखो इंडिया 1 सॉरी आर्टिकल में आर्टिकल 1 कौन को धारा के कौन कहछ रे सर सेटा पर इंडिया भारत ठीक अछि समस्त राज्य मानकर गोटे केंद्र अटे बोलेटी कुहा जाउछि ठीक अछि सो पिला हम इंडिया रा केतरा राज्य अछि रे से 28 टी राज्य अछि 8 टी केंद्र शासित अंचल रहिछि in Indian parliament has the power to create a new state under which of the following constitutional provisions मान्यवर आसीगल हो माडी चालो एलिजा जीवन पथ तो ये प्रश्न पिला बुझी पार्छ नै पचार रे जेते पार्छ प्रश्न पचार डाउट पचार रे मु बसिछि डाउट बुझिया पई मु जतबले हमर पढुतली यूनिवर्सिटी रे मोर पॉलिटिकल साइंस रो जो थिले प्रोफेसर तांको मु क्लास रे बहुत हैरान करे इन द सेंस मु तांको सो डाउट पचारे सो डाउट पचारले डाउट जोटे विषय सदृश ठीक अछि तेबे माने गोटे डाउट रहिले ना संपूर्ण माने डाउट केबे भी जीवनी छोटो डाउटे माने गोटे छोटो स्मॉल ड्रॉप ऑफ पॉइजन जहा आउ हमर कैरियर हम रे गोटे डाउट बा जे कोनसी सब्जेक्ट डाउट होची ठीक सेमतिया छोटो छोटो डाउट ही बड़ा बड़ा डाउट को हमें दूर करि परिबा ओके तबे एडी कौन हो यार आंसर सर सी हो आंसर आर्टिकल 3 देखो पिलमेंट कौन कहूची आर्टिकल 3 सेटा कहूची फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स by uniting 2 or more states भाई जदि पार्लियामेंट चाहिबो ठीक है पार्लियामेंट जदि चाहिबो कौन करि परिबो रे सर से या करि परिबो कि धारा 3 अनुसार से कौन से नुआ राज्य बा नुआ स्टेट
गठन करि परिबो बा ताको अलगा करि परिबो ओके ता एरिया भौगोलिक सीमा बाउंड्रीज ता नामकरण सब कुछ करि परिबो के ना पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू धारा 3 अनुसारे इंडियन सिटीजनशिप कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डैश अरे टे शेयर करो बे शेयर करो रे पिला माने ओके कौन है आंसर हमारे सर डिपोजिटिंग मनी इट इज कैनॉट बी लिखा ठीक है कैनॉट बी मनी इन इंडियन बैंक्स ए सब हबो ये बट ये हबो नहीं द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैश कौन है आंसर अरे मान्यवर आज व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर है नहीं कि ओके सो बी होची प्लस सटीक आंसर हबरे देखो डुअल भी हबो अच्छा अच्छा नहीं ओनली सिंगल सिटीजनशिप ठीक अछि बी our answer who or which of the following is incompetent to prescribe conditions for acquisition of citizenship कौन है आंसर आंसर दियो ओके देखो ओके प्रश्न रही कि एमानक मध्यरु फॉलोइंग competent to prescribe conditions for acquisition of citizenship so कौन आंसर प्लस समझले आंसर सी कहीं हबो रे डी हबो पार्लियामेंट हबो खाली स्टेट भाई स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली कहीं हबो ओके एटा हबो नि रे ओनली पार्लियामेंट सिटीजनशिप दे परियो fundamental rights are derived inspiration from which country's constitutions एटा हम को संविधान रो हमें इंस्पिरेशन आनचंद रे सा यूएसए ठीक अछि यूएसए होची हम कोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेखा अछि कोठी एटा पार्ट 3 रे कोन अछि हमरो संविधान हमर भाग तृतीय कौन लेखा अछि रे मौलिक अधिकार लेखा जाइछि ठीक अछि और आर्टिकल कौन यार आर्टिकल होछि 12 रु 35 एगो कौन कहंदी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया मध्य कहा जाए फंडामेंटल राइट्स आर डैश सर ए हव आंसर जस्टिसेबल ठीक अछि कौन कहले मो जस्टिसेबल हबो ए आंसर originally how many articles fundamental rights had in your constitutions
हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स थिला रे थिला हमर 7 एबे हैला केते एबे अछि 6टी मौलिक अधिकार बर्तन अछि 6टी थिले 7टा पूरा बाद दियाला रे सर राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार को बाद दे दिया गला त बर्तन 300 ए धारा रे को ऐड कर दिया जाई छी सर 6टी कोन कोन देखिबा राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ठीक अछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट सॉरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 5 नंबर 6 कहला रे सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या माने कोन रे संविधान रो प्रतिकार सो मिसी गेला के 6टी रहला फंडामेंटल राइट्स थिला 7 गोटे नाही राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार को रिमूव कर दिया जाय ठीक अछि देखो एटी सब आर्टिकल मध्ये दिया जाय राइट टू इक्वालिटी होची 14 धारा 14 18 समानता अधिकार ठीक अछि धारा 14 रु 18 सब बफरिंग होची नाही तो ऑल क्लियर पिला माने जे नेट बंचे रख रे ओके जो मनकर 4G ओके नेट बंचे की रख आज क्लास राति 12टा पर्यंत होबो बाबा सारथी कौन कहउछंती अच्छा अच्छा क्या हुआ अरे कुछ नहीं हुआ यस सो धारा 14 18 होची कोन समानता अधिकार धारा 19 रो 22 कौन कहउची फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें ओके ठीक है तापर देखिए पिला माने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन माने कोन शोषण विरोध रे अधिकार हमको शोषण करि परिबे नाही कहि आउ ओके धारा 23 और 24 फ्रीडम ऑफ रिलीजन धारा 25 रु 28 भाई जार इच्छा से धर्म नहीं जीवो ठाकुर को पूजा करिवो मोर जे इच्छा हला कृष्ण को पूजा कली खाली इच्छा हला हमर राम को पूजा करिवि खाली इच्छा हला मु शिव महादेव को पूजा करिवि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त पूजा करिवि भाई मते हम संविधान मते अधिकार देछि मोर इच्छा हला मु आजी भजन कीर्तन करिवि ठीक अछि ठीक है मीनिंग अलगार को पढौछि तो सेठ मु जीवे पन चाहिबि नै ओके सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स धारा 29 और 30 मान्यवर कौन लिखिले सर फेस रिवील करी पढ़ांतु अरे मु फेस देखिबी आज ठीक अछि आज महा मैराथन से फेस देखिबी आज जो हमर हबो क्लास हबो तो मु निश्चित भाबरे आज फेस देखिबी ठीक अछि डोंट वरी मु एबे एथि पई देखि पारु नै ये सकाळ उठी कि मु मुंह धोई नै ठीक अछि राती माने राती पर्यंत बसी आपण मन पे क्वेश्चन रेडी करथुली सो मो अधुआ मु काहे देखि बारे पिला माने ठीक अछि सकाळ उठी कोन मुख धुआ मिछ न कही सत कुह ठीक अछि सो शास्त्र कोन अछि पिला माने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज धारा 32 ओके सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस okay prohibition of a discrimination on ground of a religion okay article 15 ये कौन को देखिबा अच्छा देखो डायरेक्ट प्रश्न पचार जे आर्टिकल 15 रे पिला माने अरे कमेंट रे ध्यान न देई कि ना ठीक है एपटे ध्यान दियो क्वेश्चन को ध्यान दियो ये क्वेश्चन कौन पचार से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स
जेंडर सेटा कोन को एटा हमर होची प्लान आर्टिकल 15 कोन कोची रे सेटा कोची कि राइट टू इक्वालिटी रे समानता अधिकार हाँ क्वेश्चन न पढ़ले एमती हबो ठीक अछि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी कहा का को धारा अछि रे हम राइट टू इक्वालिटी अछि कोठी धारा 14 रु 18 पर्यंत रही धारा 14 रु 18 कोन अछि समानता अधिकार ठीक अछि which one of the following does not fall within the preview of article 21 of the constitutions भाईटा कौन पूछ रे आर्टिकल 21 लाइफ टू लिबर्टी तेबे भाई एटी कहूची डज नॉट फॉल लिखिची भाई एतिरे फॉल हबो एतिरे मध्ये आसुची कैपिटल पनिशमेंट रे आसु नहीं सो दिस विल बी आवर आंसर 6 rights guaranteed by Article 19 cannot be suspended on the grounds of as बर्तमान पिला मन आसीगला बढ़िया क्वेश्चन टी the 6th rights guaranteed by Article 19 cannot be suspended on ground of अरे आर्म्ड रिबेलियन सठिक आंसर जितले कोन हमरो सस्पेंड हेपन को समय आर्म्ड रिबेलियन पे सस्पेंड हे परिबो नहीं which of the following does not come under article 25 मालूम नहीं बेटा आर्टिकल 25 तो जानी ना कौन खाली केमती से खाली तो बड़े अंदाज चलछ अंदाज रे हां फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपोर्टेंट बारंबार कहि सब परीक्षा रे पड़िबो सो भाई डी हैव आंसर राइट टू रिलीजियस कन्वर्सन्स ओके फंडामेंटल राइट्स रो ऑलरेडी मु थ्योरी क्लास देछि ठीक अछि ताको देखि ने परे ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स ये प्रश्न रही कि फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स कोटा सर दैट इज आर्टिकल धारा 15 कौन कौन धारा 15 हमरो नो डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स जेंडर एक्सेट्रा which of the following comes under minorities definition in article 30 कौन फिर आंसर हो यार देखो ये अच्छी पिला माने आर्टिकल 30 देछि ना सर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली सो इट कम्स अंडर माइनॉरिटीज डेफिनेशन इन आर्टिकल 30 ठीक अछि क्लियर पिला मन समझते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एटी पिला माने पचाछि केउन धारा restrict करूची फंडामेंटल राइट्स को for the members of the armed forces it is article 33 which constitutional amendment act added article 21A
पिलामाने एटा कोन 21 ए कोन कि रे से 21 ए होची राइट टू एजुकेशन ओके आर्टिकल धारा 21 ए ठीक अच्छी यस बहुत बढ़िया यस रेखा रानी आरती अंजलि मान्यवर गुड सो पिला माने एटी प्रश्न पचारछि जे केउ अमेंडमेंट द्वारा एटा ऐड हितला राइट टू एजुकेशन बहुत बढ़िया जो मान दला आंसर डी दैट इज करेक्ट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा आपनकर ओएसएसटी रे मध्ये क्वेश्चन आगुरु आसी छी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके एबे जानि बा डीपीएसपी ओके पिला माने प्रश्न कोन छी हमर डीपी okay 126 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके अंजलि स्पीड जीवा श्योर स्पीड जीवा कहीं ना बहुत क्वेश्चन रही स्पीड न गले ही सरब नहीं ठीक है स्पीड जीवा ओके स्पीड गले मत परे कहबनी सर क्वेश्चन को बुझेले नहीं बोली देखो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राष्ट्रीय निर्देशामूलक नीति कौन को देखिया वर्तमान एटी को संविधान अणाई रे साला इरिस रु अणाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर फ्रॉम डीपीएसपी डीपीएसपी आर्टिकल 50 कौन हम रे सर आर्टिकल 36 रु 51 हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नोबेल फीचर कार्ड को जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्वेश्चन नोबेल फीचर कौन क्वेश्चन रेडी आंसर कौन हो यार आंसर सी ऑफ आंसर डीपीएसपी को आइची ओके 36 रु 51 को यार आर्टिकल धारा 36 रु 51 as per Gravenel Austin which part of the constitution describes as consistence of constitutions को पार्ट को जाए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी गोटे नुए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी so the directive principle of state policy may be classified into which of the council following parts of the sake of convenient study so कौन है आंसर सर ये आंसर सोशलिस्ट भी होगा लिबरल इंटेलेक्चुअल्स होगा गांधीयन भी होगा so all of the above is the correct answer देखिए परसेंट कौन को देखो पिला माने कहली मोटी डीपीएसपी देखो एटी सोशलिस्ट रही प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल मध्य रही लिबरल इंटेलेक्चुअल्स प्रिंसिपल सो दीज आर द इंपोर्टेंट आर्टिकल्स follows and please go through it so आम डीपीएसपी पिला माने कोला भाग हमर आईवी रे चतुर्थ भाग संविधान रो चतुर्थ भाग रो डीपीएसपी धारा 36 रु 51 मध्य रही सो द आइडिया बोरोड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशंस मु कहिथि आपन को जे हम डीपीएसपी आसिला कोठना इरिश संविधान रो डीपीएसपी आसिला ओके एंड सेमन आनले कोठना सेमन आनले स्पेनिश रो आमे आनले इरिश वाला आनले स्पेनिश रो क्लियर which of the following article was added 97th constitutional amendment act up to 2011 so कौन है आंसर है सर सी है आंसर 43b अरे पिला माने उठे शेयर कर दियो रे which one of the following article directs the state government organize village पंचायत पिला माने आपन को रहिछि रे कोन रे स्थानीय स्वायत्त शासन रहिछि एलटीआर रे
ओएसएसटीटी रे ओटीटी रे एको स्किप करिवो नहीं ए क्वेश्चन टा बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्वराज्य साधने न हुआ उदासी जे दीक्षारे थोरे करिछि विश्वास न छाड़ी तातिबा जाएति निश्वास स्वराज्य मानव जन्माधिकार ए भाविनी देश हुए छारो खारो सो आर्टिकल 40 होची पिला माने सठिक आंसर स्वराज्यर मांग करथिले कोन विलेज पंचायत रे ओके सो दिस इज द आर्टिकल बिलोंग्स टू विलेज पंचायत गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस विलेज पंचायत 155 देखिबा participation of workers in the management of industries is mentioned in which article यानी participation of workers in the management of industries okay it's mentioned in which article so the answer is C article 43 a article 43 a our answer ठीक अछि which of the following article of the Indian Constitution says that DPSP are fundamental in the governance of the country अरे आर्टिकल किछि हबनी आरती ओके डोंट वरी अरे आर्टिकल माने एते कष्ट ने खाली फंडामेंटल राइट्स शिख सब ठीक ठाक हो तेबे आमे कहि परिबा 156 कोन हबरे सर आर्टिकल 37 मोक प्रैक्टिस करो ओके सो नाउ फंडामेंटल राइट्स ऑफिस डीपीएसपी आके देखो यार आमे गोटे देखिया वर्तमान और डिस्टिंग्विश करिया वर्तमान फंडामेंटल राइट्स ऑफिस डीपीएसपी कोन कहूची सो फंडामेंटल राइट पिला मान देखो एनफोर्सेबल इन लॉ कोर्ट दीज आर नॉट एनफोर्सेबल डीपीएसपी एनफोर्सेबल नुहा ठीक अछि सो द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक पॉलिसी डिसीजंस ऑन दिस राइट्स बट द गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक डिसीजंस ऑन द प्रिंसिपल्स okay so अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज in the Indian constitutions are borrowed from which constitutions अरे की হবে यार आंसर अरे काली परीक्षा अछि আজি एते थकी गले तो हबो पिला माने हां किस हबो रे सर सी हब आंसर यूएसएसआर ओके इंडियन हमर फंडामेंटल ड्यूटीज आसिला कोटू हमें आनिले यूएसएसआर रो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू डैश सर सिटीजन्स ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज कहा पई लगाइते ओनली सिटीजन्स ओनली ये हबो नहीं हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर सजेस्टेड बाय स्वर्ण सिंह कमिटी लने स्वर्ण सिंह कमिटी ओके से केतोटा फंडामेंटल ड्यूटीज देथिले रे सर इतले 10टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which of the following is not a fundamental duty to vote in it is not लागिছে बाबा not लागिছি हे मोर प्रिय पिला माने जोटी लागिছি not पढिबो सेठी दिथर ठीक अछि हां तबे एटी कोन पूछिर आंसर सा ए हब आंसर रे काहे की टू वोट इन द जनरल इलेक्शन इट्स ए ड्यूटी इट्स ए फंडामेंटल ड्यूटी सो प्रथम तम पाइले आंसर
बाकी गुड़ा कहीं जीवा जे पारुछ ता पढ़ी नियो ओके सो these are the fundamental duties हम देख सो लिखाई हमर हमर कोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 टी कोन रहला रे 11 टी रहला होची मौलिक कर्तव्य ड्यूटीज माने कोन कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स माने होची अधिकार मौलिक अधिकार अलग या ड्यूटीज अलग सो 51 धारा 51 एरे लिखा वाला कोन रे सो हमर 11 टी मौलिक कर्तव्य आमे कोन सब मानुजंती केही मानु नांदी ओके मुन तो निजे भी केबे मानी परनी आपण मन कोन कहया बिन जीबी सो वर्तमान देखिबा यूनियन एग्जीक्यूटिव सो पिला माने यूनियन एग्जीक्यूटिव जो क्वेश्चन देखिया कोन आसुची वर्तमान अच्छा इते पढी दबा सो देखो द यूनियन एग्जीक्यूटिव हमरो भाग पंचम रे रहउची आर्टिकल 52 रु 78 पर्यंत रहउची एंड आर्टिकल 1 2 3 मध्ये रहउची सो हमरो पिला माने हमर सरकार रो तीनटा अंग अछि हम कहतली गोटे होची हमरो लेजिस्लेटिव ठीक अछि आउट होची हमरो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ठीक अछि सो एठी हम बर्तमान पढिला हम प्लान एग्जीक्यूटिव पढिबा ठीक अछि सो एग्जीक्यूटिव माने कोन कार्यपालिका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव से व्यवस्थापिका कार्यपालिका ने न्यायपालिका ए तीनटा हम गवर्नमेंट रो जे अविच्छेद्य अंग गोटे मिनिट पिला माने सो देखो एठी हम मध्य कहि परिबा कि यहाँ मध्य रे ए जो एग्जीक्यूटिव मध्य रे पिला माने हमरा जाउछन के रे सब प्रेसिडेंट जाउछंती वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सो एटा पिला ने भूलेबो नाही रे अच्छा सो एटी देखो बर्तमान में जानिबा कि आर्टिकल 52 कोन कहूची सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो 54 election of the president 56 term of the president 57 eligibility of the president 58 qualification of the president 60 कौन कहूची oath and affirmation of the by the president 61 कौन कहूची impeachment of the president these are the important articles okay the first citizen of the Republic of India is dash कौन होबे आंसर लमने प्रश्न रही द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज डैश अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाबुच कौन रे भाई फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किए भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड किए रे सेकंड के ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि सो पिलाने हमें कहि पड़े कि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट ठीक अछि एंड सिंबल ऑफ द नेशंस ओके सो इट इज समस्त मध्यम कहिछि अबाउट प्रेसिडेंट हम वर्तमान अछन के प्रेसिडेंट वर्तमान ओडिशा माटीर गर्व गौरव महा महिमा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ठीक अछि ओके हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन इडी प्रश्न अछि कि री इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और री इलेक्शन हे परिबो कि नाही जदी हबो केते थर हबो रे सो पिला माने एठी वंस नहे टू टाइम्स नहे थ्री टाइम्स नहे एनी नंबर ऑफ टाइम्स होची सठिक आंसर अकॉर्डिंग टू धारा 57 कौन कहूची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया states that the president is eligible for re-election. This means a person who holds
or has held the office of the president can be re-elected to that office subject to the other provisions of the constitutions. So dhara 57 देखो प्रेसिडेंट केमती हुअंती हमर इलेक्शन ना केमती हुआ रे तार हो देखो पिला माने both house of the parliament the elected members of the both house of the parliament and the elected members of the legislative assemblies of the state राज्यर समस्त राज्यर विधान सभार सभ्य मानकर भोट एवं एटी को पार्लियामेंट जे सदन रही लोकसभा एंड राज्यसभा तार होची मेंबर्स मानकर बोथ हाउस एंड हमर विधानसभा the power to inquiry into the decide all doubts and dispute arising out of election the president is vested in this अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आंसर ओके द पावर to inquiry into decide all ठीक अछि जहां भी डिस्प्यूट हो ओके अब आउट ऑफ इलेक्शन द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया president of india can be removed from his office by us by removal of the president इम्पीचमेंट आर्टिकल कौन रे धारा धारा 61 कौन कहूची कहूची इम्पीचमेंट माने महा अभियोग ओके केतळ हबो अभियोग ना रे भाई देखो एटी प्रेसिडेंट को चाहिले किए रिमूव करि परिबो ओनली पार्लियामेंट पार्लियामेंट पाखरे ही से पावर रहिची जदी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट हबो as per धारा 61 अनुसार हमें कहि परिबा कि जदि तांगनारे कोन संगीन अभियोग आसीबो कोर्ट पे जदि से वायलेट करिवे कोन ना संविधान रो वायलेशन करिवे ताहले कोन होबो तांको तांको पदबरु इस्तीफा देवा को पड़िबो न तांको बाहर कर दिया जीवो तो पार्लियामेंट पाखो से पावर अछि से ही तांको डिसीजन नै परिबो एवं इनिशिएट करि परिबो The impeachment of the president of India can be initiated in एबे से पार्लियामेंट अब सटीक आंसर पर एटी क्वेश्चन दी बुले दिस पिला माने जे को सदन लोकसभा ना राज्यसभा ना जॉइंट सेटिंग कौन है आंसर भाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओके से कोर्ट भी आराम हो पारिबो लोकसभा आराम हो पारिबो ना राज्यसभा आराम हो पारिबो कोन ना प्रेसिडेंट करो इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स ओके सो the president's seat can be left vacant for how much durations कौन है सटीक आंसर अरे प्रेसिडेंट्स सीट्स कैन बी लेफ्ट vacant for how much duration जदि प्रेसिडेंट नाहन तो तांकर ए सीट केते दिन मते vacant रही बरे भाई 6 मंथ भीतर हम कौन करिया पड़िबो री-इलेक्शन हो पड़िबो who among the following is appointed by the president एमानक मध्यरु प्रेसिडेंट काहा को दियंते अपॉइंटमेंट दियंते रे प्रेसिडेंट काहा को दियंते अपॉइंटमेंट कौन है आंसर
अरे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मध्य दियंती CAG को मध्य दियंती माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट दियंती सो डी इज द राइट आंसर यस देखो एटी एग्जीक्यूटिव पावर द प्रेसिडेंट एंग पाखर देखो पिला माने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रही फाइनेंशियल पावर रही इमरजेंसी पावर रही मिलिटरी पावर रही माने हमर कोन रे नेवी इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी से मध्य समस्त जल स्थल आकाश बाहिनी मुख्य कि प्रेसिडेंट एंड डिप्लोमेटिक पावर्स रही जुडिशियरी मध्य पावर रही न्यायिक सी मध्य कौन सर्वोच्च न्याय क्षमता अधिकारी सी चाहिए कौन भाव भाई क्या फांसी दंड से मुक्ति दे पारे Which of the following is not correctly matched? ए क्वेश्चन टिको भल भाव रे पढ़िबो नोट लागिची देखो सो हमें कही परिबा मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 57 टा होची मैच करू नाही बाकी इलेक्शन लिखा है 54 रे एग्जीक्यूटिव पावर 53 रे एंड इम्पीचमेंट 61 रे सब ठीक अच्छे यहाँ ही भूल अच्छी मैन ऑफ द इलेक्शन ओके व्हिच आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट भाई वाइस प्रेसिडेंट आमर जो चलित वर्ष नुआ है ना कौन कि देखिए पिला माने को ना सब कहिबे कमेंट रे सार को ना कौन और वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट को ना कौन और ये प्रश्न अच्छी जे को आर्टिकल तांगर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को ही कहूची यस थैंक यू पिला मैंने बहुत बहुत धन्यवाद अरे ये रेखा नीतीश कुमार कौन आसिले अच्छा देखो सो एटी में कही पिला माने वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ द कंट्री बा स्टेट ठीक अच्छे सो एठी हमें जानिबा कि एंकर जो रही पिला धारा सो ये पिला बी हाफ सठिक आंसर आर्टिकल 78 अनुसार है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन हुए रे हमार इलेक्शन प्रोसेस होता है 78 भाव पिला माने who elects the vice president भाइस प्रेसिडेंट को किए दियंती माने नियुक्ति किए दियंती हमर अरे ए हमारे आंसर elected and nominated members of the Lok Sabha clear बुझिला कि नहीं which of the following statement regarding eligibility for the election as vice president is not true ए मध्यरु कोटे ट्रू नुरे ट्रिब्यूनियम कही दउची ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन मेंबर लोग एटा ट्रू नुहे बाकी सब ट्रू अछि ओके ये ट्रू एटा ट्रू नुहे अच्छा 1 मिनट लेट मी चेक कौन होला क्वेश्चन टा
1 second 78 75 କହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ରୁହ। अच्छा, which article deals with the process of the अच्छा election of the vice president। अच्छा अच्छा election of the vice president कौन? अच्छा ठीक क्वेश्चन पहले एमती भूल ହେଇଛି। कौन लिखले पिला माने हमर? yes पिला माने एटा आपनकर आर्टिकल 66 हबरे 66 सब राइट 78 लिखा है ना, ये ठीक अच्छे ना 66 हबरे। यस आमर के रामचंद्र बहुत बढ़िया यस रामचंद्र यू आर राइट। थैंक यू फॉर मेकिंग मी करेक्शन। ओके केते आर्टिकल मन किया हाँ एटी आंसर ठीक अच्छे 66 बट मो राउंड बोली कोटा 78 रे मार देछ ना। ओके ठीक अच्छे। The oath of the office to the vice president is administered by whom? yes रेखा रानी रामचंद्र गुड। तो कौन है सटीक आंसर? सो 173 पिला माने हमर होची सी हबर आंसर। भाई वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दियंती किए ना प्रेसिडेंट। ठीक अच्छी देखो लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which one of the following article deals with the appointment of the prime minister and other ministers? कौन है आंसर? अरे रे ओके सो 174 कौन आंसर यार? सर आर्टिकल 75 कौन कौन हमर कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डैश इज क्वेश्चन by member of either house of parliament। ठीक अच्छे ये नॉट मेंबर नुहे रे खाली मेंबर लोकसभा हबन राज्यसभा हबन। तो कौन हम आंसर होची डी हम आंसर कि मेंबर ऑफ उभय से माने सदन रो मेंबर अटंदी। सो देखो आर्टिकल 75 लिखा है ऑलरेडी। तबे these are the additional informations regarding the Prime Minister of India. Please go through it. What is the minimum age required to become a Prime Minister of India? केते एज केते दरकार रे? 176 कौन को देखो मिनिमम एज केते हेले जने इंडिया रो पीएम हेई परिबो? एक दिन के लिए पीएम बनने चाहते हो तो बोलो। नायक मूवी देख लो बेटा। सर 25 इयर्स काहो 25 इयर्स हेची तो से माने ही हेई परिबे। ठीक है जाको हेई नि 25 इयर्स से माने हेई परिबे नि। माशा करछि समस्त हेई सरथियो। Who among the following shall communicate to the president all decisions of the council of ministers under article 78?
सर बी हम आंसर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये कौन करेंगे रे भाई सब जिन जनइबे क्या ना प्रेसिडेंट को जनइबे। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमिटी? अच्छा अच्छा हाँ जार है नहीं ताले है परिबनी आ कौन आगे जदि 18 वर्ष अधिक होइछि ताले फास्ट कौन करिवो रे निज टिके गाँ रे फास्ट टिके छिटिड़ा हुआ आज वार्ड मेंबर बोले सरपंच तो ये कौन हो आंसर कौन हो रे सर बी हैव आंसर प्राइम मिनिस्टर। आई 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 अरे एटी अच्छी नेशनल डिफेंस हेड नेशनल डिफेंस कमिटी नेशनल डिफेंस कमिटी हेड किए हम रे एक्चुअली कौन कहूँ देखो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हेड किए सर निज डिफेंस मिनिस्टर। ठीक अच्छे डिफेंस मिनिस्टर आम कहीपर सो ये जो कमिटी पचार कमिटी है कमिटी तो कौन हम एक्चुअली ये गोटे ऑप्शन देखो दरकार थिला एटी कि द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर द नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक अच्छे सो एक्चुअली ये ऑप्शन ही ना तेणुक पे समस्त गोटे मिल ग्रेस मार्क मिल ओके सो ये प्राइम मिनिस्टर करवा नहीं सो ये आम दवा ऑप्शन ये दवा ई। ठीक अच्छे द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे सठिक आंसर हम ओके सो ये ऑप्शन ना तो आप गोटे एक्स्ट्रा मार्क मिल बट फॉर योर इनफॉरमेशन मुझे चाहिए ये प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल डिफेंस कमिटी हेड रुहती कारण सी दिखती निर्देश क्या ना द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। ठीक अच्छे व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस describe the appointment and disqualification of the council of ministers? Our answer इजी क्वेश्चन से पिला माने सर आर्टिकल 75 आम अलरेडी कर सारी। ठीक अच्छे द सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर डैश। ओके सो पे 6 मंथ सठिक आंसर पे जो मैंने देखु समस्त कहवाई चाहिए कि आज 4 PM आरंभ हो महामाराथन कहीं मिस कर रे यस अंजलि रामचंद्र रेखा ओके कैबिनेट इंक्लूड्स कैबिनेट क्या गठन कराई सर मिनिस्टर्स विथ कैबिनेट रैंक देखो डेप्यूटी मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैबिनेट
सो कौन रे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Okay. The parliament in India has adopted parliamentary systems of the constitution from which among the following countries? कौन आंसर कौन हो रहे? ओके देखो 182 आम कहीपर से बी हम आंसर. ठीक अच्छे. पार्लियामेंट्री सिस्टम आम आनले कौटू से आम आडप्ट कले हूँ यूके रु ब्रिटिश संविधान पार्लियामेंट सिस्टम रु. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया deals with the recognition, composition, duration, officers, procedures, privileges, power of the parliament under dash. That is धारा 79 रु 122 122 पर्यंत जहाँकि भाग आमर पंचम रही. The Constitution of India deals with the organizations, compositions. Indian Parliament consists of dash. कौन मेरा आंसर? सर डी आंसर प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा एंड राज्यसभा रही डिफरेन्स रही पढ़ी नब देखी नब देख द इंडियन पार्लियामेंट शुड मीट एटलिस्ट डैश. कौन मेरा आंसर? सब बी आंसर ट्वाइस a year. Which one of the following about the Parliament of India is not correct? Not correct लिखे जाए. So B of answer. There are two nominated members in the Lok Sabha. भूल आंसर. ओके ये वो ठीक, ये ठीक, ये ठीक. Which of the following Constitutional Amendment Act removed the provisions conducting reservations of seats for Anglo-Indian community in Lok Sabha? इतना नहीं है. अब ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, फिर भी क्वेश्चन कर नहीं हो. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का तो दिया जाओ नहीं जानी था सर. 104th amendment. In which year Rajya Sabha constituted for the first time? कौन सा आंसर? सी आंसर 1952 मसीह. हे 1900 नहीं. हाँ ठीक 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 52 डे. ओके सो एबे देखिबा what are the maximum number of seats fixed for Rajya Sabha in India? सर 250. मैंने आम के सीट अच्छे रे राज्यसभा सीट संख्या के 250 238 plus 12 nominated. Who among the following decides
whether a particular bill is a money bill or not. किए करंदी डिसाइड करंदी कि मनी बिल पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल. ओके सर स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही डिसाइड करंदी. Which of the following article define the money bill? कौन आंसर यार 191 सर ए have answer. Which of the following article deals with the annual financial statement or budget? annual financial statement और budget संगर को article टा deal करछि रे. बहुत बढ़िया धारा 112. तो टाइप्स ऑफ बिल इट अच्छी ऑर्डिनरी बिल मनी बिल फिनान्शियल बिल स्पेशल बिल. सो आम कह कि फिनान्शियल देख फिनान्शियल बिल गोटे अच्छी पिला आमर ओके फिनान्स बिल 1 फिनान्स बिल 2 एंड स्पेशल बिल कौन कौन कहूँ ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग article talks about the contingency fund of India? हाँ सर ये आंसर डी हमारे आर्टिकल 267. अच्छा 0 hour is the contribution of which country to the parliamentary system? 0 hour. कौन आंसर 0 hour. Sir, A have answer India. Who among the following is authorized to preside over the joint session of the parliament? Sir, Speaker of the Lok Sabha. ठीक अच्छे से कौन कर पारे से प्रेजेंट कर पारे ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. Who has the right to issue money bill from the consolidated fund of India? Who has the right? कार अच्छे अधिकार सब पार्लियामेंट. Which of the following committee examine the annual audit report of the Comptroller and Auditor General of India? We have answer Public Accounts Committee. The Speaker is the ex officio chairman of the dash. A. Rule committees.
स्पीकर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन। ठीक अच्छे। ओके सो पिला माने आमे आज एते गुडी वर्तमान पाठ करिसंती तो समस्त ये प्रश्न आंसर दो था। क्लास रे अछि कौन कौन है कहा को हो हो ठीक अच्छे एबे सांगे सांगे पठे अछि। हो 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 हम क्लास रे स्टडी करछे। ओके सो कौन हो आंसर पिला माने डी हब आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक अच्छे। Supreme Court of India was inaugurated in the dash year। आमे वर्तमान किसी हिस्ट्री क्वेश्चन करिबा। कौन हो सठिक आंसर यार समस्त आंसर दिया। समस्ते आंसर दिए पिला मान टिके ओके आपण मन पई ओके क्वेश्चन नहीं आसुची। समस्ते टिके अपेक्षा करंतु। हिस्ट्री क्वेश्चन ओके। ओके तो वर्तमान आमे आ गोटे सेशन पढ़िबा। गोटे मिनट पिला माने टिके हमें ब्रेक नंबर गोटे मिनट रो।
one minute, huh? 1 minute. ओके, तेरे समझते प्रश्न आंसर दे रहे कौन है आंसर? अरे who of the following ruler constructed the Sanchi Stupa? अशोका अच्छी कोटी सर एमपी रे अच्छी मध्य प्रदेश रे एंड इट इज आल्सो यूनेस्को साइट्स हम थर्ड सेंचुरी रे एटा होछ हमर हेतिला इन व्हिच ईयर वाज द फेमस वार ऑफ कलिंग फॉट कलिंग को वर्ष रे हमर लड़ी हेतिला रे कलिंग वार सर 261 ठीक अच्छे 261 होता कलिंग वार कौटी रे दरिया नदी कूल ओके एंड आमर कलिंग राजा प्लस अशोक मध्य घमाघोट लड़ाई होता लैंग्वेज यूज्ड इन इनस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज कौन बार आंसर सब पाली ना प्राकृति ना कौन हम सब प्राकृतिक लैंग्वेज हु amongst the following Mauryan rulers did conquer the Deccan किए सर चंद्रगुप्त मौर्य ओके चंद्रगुप्त मौर्य ये फाउंडर कहाँ रे ना मौर्य साम्राज्य थे फाउंडर हु वाज द फर्स्ट किंग टू कंक्योर मालवा गुजरात एंड महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ओके चंद्रगुप्त मौर्य figures prominently in the book of को बुक सर मुद्रा राक्षस लिखले कि ना विशाखा दत्त हु रिकॉग्नाइज्ड सैंड्रोकोटस आज चंद्रगुप्त मौर्य विलियम जोन्स यस विलियम जोन्स ओके First Indian Empire was established by Dash. कौन है आंसर है सर चंद्रगुप्त मौर्य Which among the following is India's oldest dynasty? अरे एटा भी हम कौन आमर हाँ यस बी हब आंसर मौर्य साम्राज्य इंडिया ओल्डेस्ट डायनेस्ट हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्स अबाउट द मीटिंग ऑफ सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य विथ अलेक्जेंडर द ग्रेट Justin. Kautilya was Prime Minister of Dash. एथले कहार थे प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य थे
The Arthashastra of Kautilya is dash. The Arthashastra of Kautilya. It's a book on principle of the government. Which one of the following is the seventh part of the state according to Saptanga theory? Saptanga theory. Swami, Amatya, Janapada, Durg, Danda, Kosh, Samitra. ये बिलोंग सप्तांग थ्योरी ते मित्र होगा लास्ट रची मित्र ठीक अछि which of the following officials was not a part of the Mauryan administration? Rajuka, Yukta and Pradeshika थिले माने part of Mauryan empire नथिला किए रे सही नथिला आग्रहिका नथिला आग्रहारिका नथिला A Buddhist council during the reign of Ashoka was held at So the answer is Pataliputra. Kalidasa was in the ruling period of dash. Common answer. Yes, answer is Chandragupta 1. Which are the Gupta's gold coins? Gupta में गोल्ड कॉइन कोटा थिला रे दिनारा ठीक है दिनारा होची गोल्ड कॉइन The silver coins issued by Gupta were called rupak. Gold थिला दिनारा silver थिला rupak. Who of the following was the first Gupta ruler to issue coin? Chandragupta 1. Who established Gupta Sambhat? Common answer. Chandragupta 1. The game of chess is said to have originated in dash. India. Okay, India. Who is the known as the Napoleon of India? कौन है आंसर सर समुद्रगुप्त कौन कहा जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया बोले को कहा जाए The first Gupta ruler to assume the title of Parama Bhagavat. Yes. Our answer is Sir Chandragupta 2. Who among the following is known for his Ayurvedic thematic compositions during the Gupta period? Our answer Sir Sushruta. ठीक अछि Okay.
What was the land revenue rate in Gupta age? Common share. So eighth part of the productions. In ancient time, Odisha was known by the name of 𝐾𝐨𝐫𝐭. In which year did Hwinsa visit Odisha? 630 AD. Who constructed the Lingaraj temple at Bhubaneswar? Kovansha. Somavansha. Who defeated last Nanda ruler Dhanananda? Chandragupta Maurya. Okay. Tripitaka texts are related to which religion? प्रश्न त्रिपिटक टेक्स्ट क्यों धर्म रही तो पे यहाँ अपन होमवर्क ठीक अच्छे समस्त कमेंट देवे तो बर्तमान आम ए क्लास को ये एंड करवा पुणी देखा आउ गोटे नुआ सेसन रे आज अपराह्न 4टा बेले समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।